Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Study with Rameshwar. As we are studying the class 5, the new textbook that is TWAU, the world around us. In previous two videos, we are studying the lesson first, water, the essence of life. So come to the next topic under this lesson, that is water cycle. So what is meant by water cycle that we are going to study in this video. So for that purpose there is a one activity is given here. So सबसे पहले आपको क्या करना है, सी एक्टिविटी नंबर 3. In this activity you have to take a one transparent bag and use a marker to draw the sun, clouds, trees and arrows on it as shown in the picture, as here it is shown in the picture. Okay, so fill 1/3 of it with a colored water. You can use blue pen और फूड डाई फॉर दिस. तो इसमें आप क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट बैग लेंगे और उसमें उस ट्रांसपेरेंट बैग को आपको इस तरह से ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं उस पर. ठीक है. सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक्स. द बैग शुड बी सील very properly so that the water should not leak. Place it in the sunlight and after a few hours observe the changes inside the bag. So what you have to do, this activity you can do it at your home also so that you can learn the things. ठीक है. So after a few hours observe the changes inside the bag. उस बैग के अंदर क्या चेंजेस होते हैं आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. So observe first, that is water heats up. So how does water heat? Due to sunlight. How does water heat? Due to the sunlight. As we all know, whatever the sources which are present on the earth, जो भी पानी के सोर्सेस है, मीन्स जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, जो लैंड पर सोर्सेस है, सो all these sources get the sunlight, and due to that what happen, the water is going to heat. Okay, so as the water is started heating, so that liquid form of water is started getting to convert into a gas, into a steam or a vapor. So यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो ब्लूइश पार्ट है दैट इज़ वाटर है, और जैसे सनलाइट उसको मिला तो ये जो पानी है वो लिक्विड है, वो लिक्विड एज इट इज़ ऊपर नहीं जा सकता है, तो क्या होता है उसका कन्वर्जन वेपर में होता है, स्टीम में होता है. एंड जैसे वो ऊपर स्काई में जाता है तो वहाँ पर वो क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है. जो ड्रॉपलेट इट फॉर्म्स द क्लाउड्स. तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वेपर से वहाँ पर क्लाउड बनते हैं. वो क्लाउड्स में जो ड्रॉपलेट होने के कारण दैट बिग ड्रॉपलेट्स दैट गेट अ कूल एयर, and due to that cool air that clouds are not able to handle the droplet. Okay, and due to that what happened, so that fell down on the earth in the form of rain. तो जो हीट के कारण जो वेपर बनी, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. क्या कहते हैं बच्चों? इवेपोरेशन. The conversion of water into a vapor, this process is known as evaporation. Okay, then afterward what happen, then it reaches and it forms the clouds. So that vapor get converted into water droplet, that is condensation. It forms the water droplets, it forms the clouds, that is condensation, and then that droplets get converted into the raindrops, it is known as precipitation. So these three steps are there in this water cycle. So observation is here, see, water droplets form inside the cover. So water droplets are forming
inside the cover. So let's see what happened actually. So as you have seen in the above activity, the sun's heat causes the water to turn into water vapor. तो जैसे सन की हीट मिलती है पानी को तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, वाटर वेपर जाके ठंडी होती है तो वो फॉर्म करती है वहाँ पर ड्रॉपलेट फॉर्म करती है. क्या फॉर्म करती है? स्मॉल ड्रॉपलेट इनसाइड द बैग. सो इवेंचुअली दिस ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन. And similarly, in nature, heat causes water from different sources like ocean, rivers to become water vapor. Water vapor forms the clouds which come down as the rain, snow and hail. और फिर जो ड्रॉपलेट्स है वो रेन के फॉर्म में, कभी स्नोफॉल या फिर हेल्स के फॉर्म में अर्थ पर, ग्राउंड पर आती है. एंड दिस वाटर गोज बैक इन टू रिवर, lake and ocean, and again the same water reaches to the different sources which are present on the land. Okay, so this constant circular movement is nothing but the water cycle. इस तरह की ये जो constant movement होती है इसे ही कहते हैं वाटर साइकिल. इसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल. ठीक है. सो नाउ see here, the clear picture is given. Just see here this, what are the steps which are present in the water cycle. So first one here, that is vaporization or evaporation. Okay, इसको वेपराइजेशन कहेंगे, जो यहाँ पर क्लाउड्स बनाते हैं पानी के. ठीक है, दैट इज कंडेंसेशन. दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. द वाटर ड्रॉपलेट्स or that vapor get converted into a clouds or condense. It is known as condensation. And when these clouds, they get the cool air, so that the big droplets, they are not able to handle that, so that droplets comes on the earth surface. It is known as precipitation. This process is known as precipitation. Precipitation. Okay, so these processes are involved in the water cycle. So in this way, these three processes are present in the water cycle. So this process is continuous, so it is known as a water cycle. I hope here the concept of water cycle is clear. Thank you.